Hi, good afternoon, everybody. This is Bishwajit Datta, and you are watching ASCAT. मेरी आवाज़ थोड़ी सी गड़बड़ है बिकॉज आई वॉज सिक फॉर क्वाइट नंबर ऑफ डेज. इसके कारण थोड़ा सा आवाज़ दब गया है. सो मे बी थोड़ा सा इंटरफेरेंस रहे. सो मैं पहले आप लोगों से माफ़ी मांग लेता हूँ इस चीज़ के लिए. सेकेंड, today's topic for discussion is very simple, and that is for CAT 2025. I have not made any video for the last 5-7 days because of this reason that I was suffering from common cold. Now today's purpose for making this video is to make realize that CAT 2025 has already started and people must be contemplating as to how somebody can prepare for this exam. Now today my agenda for CAT is how would somebody prepare the important topics and how the summarization of those topics can be done. This is specifically for quantitative ability. Let me write this very clearly. This particular lecture, this particular session is absolutely for the students who are thinking as to how someone can prepare the quantitative ability part for CAT 2025. Now there are two headings you could see, important chapters to be covered, number one, and how to cover those chapters. Now you must be finding this real fact that there are 3 to 4 different elements that we need to cover in the quantitative ability part when it comes to CAT 2025. One is your arithmetic, which you know is the bread and butter for this exam. And if you're not doing quantitative ability with arithmetic in mind, that means you are playing a foul game. So that is the most important part. Second is algebra, which most of the people feel very awful about it. So they do not prepare from the very beginning. So at the end of the preparation, they try to figure it out that if something can be adjusted, and we are, if possible, be able to get 3 to 4 questions in that, then I think that is going to be a miracle. But you know that there is no miracle in exams. It is always a hardcore studied concept that are going to be applied in the paper, and that's how you are going to perform in the exam. So algebra is again a very important aspect of this examination. Third is geometry. Geometry people very less rely on, and that is very simple fact that in every question you will find something or the other thing to be used. You feel, oh my God, I'm going to get the answer. The concept is just coming in my mind. I'm thinking, I'm contemplating. But if you keep on thinking like that, even if you pass an hour, you will not get that concept. It is so very captivating. It is so very captivating that you realize that I'm getting the concept right at this moment. But then you do not get that. So these all problems are not sudden. These are really the problems in the paper. These are really the problems that every one of you, when go and write this exam, you will encounter this. Undoubtedly. So let us make a strategy how somebody can overcome these problems. These are the 3 main topics that you are supposed to prepare when it comes to quantitative ability. See, PNC probability, I do not use it because of the fact that you're going to get 1 or 2 questions in that, and this particular chapter is not going to connect with concept with the other chapters of the preparations. So a small preparation can be adjusted and we can be able to do justice in the exams. Now, important chapters to be covered. मैंने ना हमेशा सबको बोला है, या तो पूरा करके जाओ या तो मत जाओ. पूरा मतलब पूरा. यदि आप 6 से 9 महीने की तैयारी कर रहे हो ना, फिर यार आपके पास ये एक्सक्यूज नहीं है बोलने के लिए कि मैंने ये टॉपिक नहीं पढ़ा था, मैंने नंबर सिस्टम कवर नहीं किया, मैंने अलजेब्रा का क्वाड्रेटिक इक्वेशन कवर नहीं किया, मैंने लॉगरिथम नहीं पढ़ा, या मुझे लॉगरिथम समझ में नहीं आता है. आप ऐसे नहीं बोल सकते हो. यदि आप 6 से 8 महीना 10 महीना लेकर इस एग्जाम को तैयार कर रहे हो, then the only thing that is expected from you is to have everything in your mind. You must have done each and every chapters.
To segregate important chapters from the whole syllabus is a kind of task that we usually do when I have very less time to prepare for the exam. Somebody comes with just 1.5 months in pocket, thinking not to just clear the exam but to get a 99 percentile marks. At that point of time, you can be strategic in making your preparations to certain extent that somehow you are able to manage the cutoff. लेकिन जब आपके पास 6 से 8 महीने 10 महीने आपके हाथ में होते हैं तो आप ये स्ट्रेटेजाइज नहीं करते हो कि मुझे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है. आप ये स्ट्रेटेजाइज करते हो कि मेरे से कोई छूट तो नहीं रहा है, मेरे से कोई पार्ट ऐसा तो नहीं छूट रहा है जो पता चला कल को पेपर में बिल्कुल आ जाए. मैं कई दिनों से ये बात कह रहा हूं कि यार कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मलाइजेशन इज एब्सोल्युटली रॉन्ग इन द एग्जाम, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन कैन बी कंट्रोल्ड. I can give you quite a number of ways how the normalization can be controlled. बट मैं आपको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट देता हूँ कि कल को एग्जामिनर यदि बोलता है कि पहले स्लॉट में मैं अरिथमेटिक डालूंगा, सेकंड में अलजेब्रा और थर्ड में ज्योमेट्री, देन व्हाट विल हैपन. बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो रह जाएंगे जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि उसने अरिथमेटिक पढ़ा, ज्योमेट्री और अलजेब्रा नहीं पढ़ा, या ज्योमेट्री पढ़ा लेकिन अलजेब्रा और अरिथमेटिक नहीं पढ़ा, या अलजेब्रा पढ़ा लेकिन अरिथमेटिक और ज्योमेट्री नहीं पढ़ा. Therefore, it is always expected that you should prepare everything. Everything. You should not be leaving even a single chapter, even a single topic, even a single exercise when you prepare a particular exam. खास करके क्वांटिटेटिव एबिलिटी में आप कुछ नहीं छोड़ेंगे. तो आप सोचोगे सर क्या यही बताने के लिए आपने लिखा था इंपॉर्टेंट चैप्टर्स टू बी कवर्ड? जी, मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड इसको इसलिए लिखा ताकि आप इस बात को समझो. There is nothing called important chapters. All the chapters are important. That is the reason why it is in the syllabus. If it had not become an important part of a syllabus, it would not have been placed in that particular syllabus just like that. It was assumed from the very beginning, this is the assumption of the examiner, that these are very important topics and you must not leave them at all under any circumstances if you are preparing for this high-end game called CAT. लेकिन दोस्तों, हाउ टू कवर दिस टॉपिक्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क. यू नो, देर आर 2 rounds. Okay, let me write down round 1 and round 2. You know why I'm writing round 1 and round 2? In the first round, you have to cover up all the topics individually, considering that topic to be important, considering the questions of that topic, considering the uniqueness of the properties that you study in each topic. That means I'm talking about intrinsic study of the topics. The inherent quality, the inherent characteristics of the topics are to be taken at first priority. कहने का मतलब ये है कि यदि मैं परसेंटेज पढ़ रहा हूँ ना, तो उस परसेंटेज के चैप्टर में जितने भी परसेंटेज के कॉन्सेप्ट या वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं मुझे आना चाहिए. और जब मैं परसेंटेज पढ़ रहा हूँ तो मेरे को किसी दूसरे चैप्टर के बारे में नहीं सोचना है हाउ दिस चैप्टर ऑफ परसेंटेज इज गोइंग टू बी अप्लाइड इन सम अदर चैप्टर्स. नो, मैं केवल और केवल परसेंटेज को कवर करूंगा. हाँ, परसेंटेज करते समय यदि कोई टॉपिक, कोई कॉन्सेप्ट मेरे को यूटिलाइज करना पड़ रहा है, देन आई विल यूज इट, बट माई मेजोरिटी ऑफ प्रिपरेशन वुड बी विद परसेंटेज. Now, if I study profit and loss, I'll be with profit and loss. If I study simple interest and compound interest, I'll be with simple interest and compound interest. This is the objective preparation of each and every topic that will make your preparation very stronger. Ever. That is my round 1. So, in round 1, individual topics are to be taken very seriously. फिर चाहे मैं केवल ट्राइंगल्स क्यों ना पढ़ रहा हूँ, यदि मैं ट्राइंगल्स पढ़ रहा हूँ तो ट्राइंगल्स के अंदर की सारी बातें, सारी चीज़ें जो हो सकती है मेरे को मालूम होनी चाहिए. आई शुड बी एबल टू फिगर देम आउट कि हाँ यार, ट्राइंगल्स की ये प्रॉपर्टीज होती है, इतनी प्रॉपर्टीज होती है, मुझे हर एक प्रॉपर्टी आती है, एंड आई एम वेल इन डूइंग दैट. यदि मैं अलजेब्रा पढ़ रहा हूँ तो मुझे लीनियर इक्वेशंस की सारी प्रॉपर्टीज आती है. यदि मैं क्वाड्रेटिक पढ़ रहा हूँ तो मैं क्वाड्रेटिक के अंदर की सारी पढ़ाई कर रहा हूँ. Now when I am studying quadratic, I am not thinking about AP and GP.
And when I'm doing AP and GP, I'm not thinking about any other chapter. That means my intention is to give a complete coverage of each and every topic which is required for this examination. क्या होता है ना, जब हम मल्टीपल टॉपिक्स को एक साथ लेके करते हैं ना, तो कई बार ऐसा होता है कि एक टॉपिक को इंपॉर्टेंस देने के चक्कर में दूसरा टॉपिक रह जाता है. सो आई वांट दैट यू शुड मेक दिस कैलकुलेशन, पुट इट इन अ पेन एंड डिसाइड, हाँ यार ये भी उतना इंपॉर्टेंट है, ये भी उतना इंपॉर्टेंट है, मुझे दोनों टॉपिक के ऑब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग है पूरा पूरा. दैट इज माई फर्स्ट राउंड. माई फर्स्ट राउंड इज नथिंग बट द ऑब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच एंड एवरी टॉपिक बेस्ड ऑन ईच एंड एवरी चैप्टर्स. दैट्स इट. पता है 3 महीने लगेंगे आपको इसमें करने में, नॉट मोर देन दैट. 3 months. 3 months are important for the first round. Okay. Now the second round of preparation is again very important. This is the first circle that you have completed when you have done round 1. Now when you go for the second round, there is another preparation of all the chapters over again. So this is the second time that you will be covering all the chapters again, but this time you are going to be very specific in your preparation, making each and every topic to be connected with the other topic. मतलब हो सकता है वर्क एंड टाइम के कॉन्सेप्ट को मैं एपी में यूज कर सकता हूं. हाउ द इंटरमिंगलिंग ऑफ द टॉपिक्स कैन बी यूज्ड टू फ्रेम ए क्वेश्चन and how to apply your concept, your ability, your analytical skill in order to solve and cater that kind of questions. तो राउंड 2 में मैं केवल सिंगल चैप्टर वाइज प्रिपरेशन नहीं करूंगा. राउंड 2 में मेरे किसी भी चैप्टर को किसी दूसरे चैप्टर के साथ कनेक्ट करके उसको मैं कैसे कर सकता हूं, दैट आई एम गोइंग टू स्टडी. तो सेकेंड राउंड इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स वे ऑफ प्रिपरेशन एंड दैट कुड ओनली बी पॉसिबली डन प्रोवाइडेड दैट द फर्स्ट राउंड मस्ट हैव डन वेरी वेल. Once that is done, you are now able to connect one topic with another, and you can sometimes be able to make 2-3 topics combined together to make an understanding and then be able to solve the questions. Think of a situation. How could an examiner is going to make a tough paper in the exam? It is only when he is going to apply 2 or 3 concepts together to make a question. That means when I am going to solve that question, I would not only need an objective understanding of the topics, but also how the topics are going to apply it simultaneously at the same time. And that's how I should be well in doing. The second round is going to help me in that way. Believe me, to complete the second round, you need another 2 months of time. That means in the first 5 months of time, you will be prepared. And once this is done, then you start doing your mock test papers. That's it. This is the only thing required. 5 months of preparation in this particular topic called quantitative ability must be enough. अब जानते हो मैं इसको एम्फसाइज क्यों कर रहा हूं. पूरी दुनिया को लगता है कैट इज एन एग्जाम ऑफ क्वांटिटेटिव एबिलिटी. नो, गलत है बात. कैट इज एन एग्जाम ऑफ इंग्लिश. कैट इज एन एग्जाम ऑफ इंग्लिश बिकॉज ऑफ द फैक्ट that by the virtue of doing all the questions in the examination, we decide that the examination is all about which section. आप इस बात को मानो, इंग्लिश का सेक्शन एक ऐसा सेक्शन है जिसमें आप पूरे सवाल कर सकते हो. जानते हो क्यों करते हैं हम इंग्लिश के सेक्शन को पूरा? इंग्लिश के सेक्शन को 10 सवाल को सॉल्व करके आप ये डिसाइड नहीं कर सकते हो कि आपका कट ऑफ निकल रहा है, और ना ही 12-13 सवाल करके आप ये डिसाइड कर सकते हो कि मेरा कट ऑफ निकल रहा है. Because you never know whether your answers are correct or not. So therefore it is advisable that if possible, try to do all the questions of English. Maybe if you made 50% of them wrong, still you will be getting a very good percentile when it comes to English. Maths, that is quantitative ability, and DILR are the only 2 sections which even if you do 10 to 12 questions, you are still be able to figure this out whether you are in or out. Because when you do the questions, you get the answers. When you get the answers, you match with the options. And when you see that my answers are with the options, then you realize कि मैंने ठीक किया होगा. So the sections of quantitative ability and DLR are more acknowledging. Okay, it gives you a verification that whatever that you have done well. So if you have done 10 to 12 questions, I think 8 to 9 are definitely going to be true.
So you are going to get your cutoff. The same does not happen with English. That is the reason why the paper is about English. And this is the reason why it is advisable that English का पेपर पूरा करना चाहिए. और मैथ्स का पेपर, DLR का पेपर हमेशा से ये स्टूडेंट के कब्जे में होता है. इट इज़ इन योर पोजेशन. आपको मालूम है कि 8 से 10 सवाल आप कर ही सकते हो. यदि नहीं कर सकते यदि इसका डाउट है तो आपको एग्जाम नहीं देना चाहिए. यू शुड लीव इट, गो फॉर समथिंग एल्स. Even from the very first day, by the time you start entering into the hall to start your preparation with any institution, make sure this, that from the very first day you have this guarantee in your pocket that 8 से 10 सवाल तो मैं बना लूंगा यार, मुझे मालूम है कहाँ से डालेगा एग्जामिनर. इतने सारों से पेपर हो रहे हैं, इतने सारे मैंने टेस्ट पेपर्स देख लिए पुराने. नाउ आई कैन प्रिज्यूम ये पेपर, इसमें 8 से 10 सवाल तो इन्हीं टॉपिक से लाजमी है, बनेंगे ही बनेंगे. एंड आई एम वेरी वेल श्योर दैट आई एम गोइंग टू मेक माई कट ऑफ विदाउट हेजिटेटिंग. बट मुझे इंग्लिश का पेपर पूरा करना पड़ेगा बॉस, बिकॉज इट डज नॉट गिव मी द गारंटी अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस कि मेरा इंग्लिश का पेपर 100% ट्रू होगा. देता है वो ओनली व्हेन यू गेट दैट लेवल. सो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग दैट इसको राउंड 1 राउंड 2 में फिनिश करके विद इन 5 months ऑफ टाइम आई बिलीव दैट यू विल बी एबल टू कम टू दिस अंडरस्टैंडिंग कि मेरा कट ऑफ DLR और क्वांटिटेटिव एबिलिटी में आराम से निकल रहा है. सो आई नीड नॉट टू वरी एट ऑल. So that is the reason we are pushing every student to cover up each and every chapters, because the intermingling of topics can be very dangerous sometimes. Think of a situation that you know the question on percentage. Okay, but the question when you solved, half part has been solved with the help of percentage, and now to get the answer I need to associate some concept of algebra in that to make my answer. Now I do not know how to solve that question using the concept of algebra. Now I am out in that question. If I am out in that question, now I am not going to get any answer. मेरे को सवाल छोड़ना पड़ेगा, मेरा टाइम भी गया, नंबर भी नहीं मिला. सो आई एम डन. ये सिचुएशन नहीं आए इसलिए राउंड 2 इज मोर इंपॉर्टेंट, एंड राउंड 2 हैज ए कंप्लीट डिपेंडेंसी ऑन राउंड 1. So this is how somebody can prepare for this exam with round 1 and round 2, studying all the concepts conceptually, objectively in the round 1, and then in the round 2, intermingling of the topics could help you to memorize various ways of doing the questions that have complexity in terms of its solving process. So this was all that we have for this particular session of discussion. I hope you understand what I'm trying to pull in your mind about CAT 2025, keeping quantitative ability in your mind and my mind as well. Okay, now we at ASCAT have started the working both in the online as well as the offline formats. You people are welcome to be a part of the demo sessions that we do inside the class as well as the online. Okay, at any point of time when you think that you would like to go for such online sessions or offline sessions, you can call us at this number, that is 9329620356. And subscribe ASCAT for the videos. The videos will keep on rolling with new insight to make you understand the variety of aspect of the examinations and the variety of things on which we people who are into this profession are going to get affected. Thank you so much. May God bless you. Bye bye.